अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका त्रिणैः गुणत्वम् आपन्नैः बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। संहति भावं संधार्य सार्ध-200 पदावलीं संश्रियमाणा इयं वार्तावली सामोदं सोल्लासं च सत्करोति सात्विकता संपन्नान् सुहृद्दर्शकान्। समभिवन्दे अहं सुनील जोशी। एतावान् प्रदीर्घः पदक्रमोऽयं वार्तावल्याः सर्वथा सफलः सिद्धोस्ति संस्कृतसञ्जीवकानां भवतां प्रियप्रेक्षकाणामेव कारणात्। प्रणतिं च प्रस्तौमि अहं सत्यप्रिया। तस्मादेव च सत्यप्रिये अस्माभिरपि संस्कृति सरणिम् अनुसृत्य आरभणीयोऽयम् अङ्कः सद्वाची सुभाषितद्वारा। तर्हि कोत्र विलम्बः? इदमस्ति सुभाषितम्। आनृशंस्यं परो धर्मः याचते यत् प्रदीयते अयाचतः सीदमानान् सर्वोपायैर्निमन्त्रये। याचना के बाद किए जाने वाला दान प्रशंसा की योग्य है, पर कष्टों को सहकर भी याचना ना करने वालों को दया से वशीभूत होकर अनेक उपायों के बाद किया जाने वाला दान वास्तव में बड़ा धर्म है। Giving alms to a beggar is a virtuous act, but the needy who suffer but do not beg must always be helped. साम्प्रतिके हि कोरोना संत्रस्ते समये मन्ये सार्थमेव एतद्वचः। संसारे संलक्ष्यते सर्वत्र कोरोना विषयिणी विविधायाम स्पर्शिनी चर्चा। न चैतन मात्रमेव वार्ता विश्वमपि व्याप्नोति इदमेव कोरोना संबद्धं वृत्तजातम्। विषमेपि अस्मिन् समये मानवतायाः धीरोदात्तरूपम् आविर्भवति कोरोना योद्धॄणां समर्पितसेवाकार्यैः विभेदविस्मृतिपुरस्सरं च संहति भावाधृतैः लोकाचरितकृत्यैः। इदमेव सर्वं संकलय्य उपकल्प्यते अद्यतनः अस्मदीयो वार्ता प्रवाहः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अम्फानाख्य भीषण चक्रवातात् दुष्प्रभावितानां क्षेत्राणां वायव्यं सर्वेक्षणं व्यदधात्। पश्चिम बंगाल ओडिशा प्रशासनाभ्यां क्रमशः 1,000 कोटि रूप्यकाणि 500 कोटि रूप्यकाणि च आपत्प्रतिकारक्षणे साहाय्याय सन्ति प्रधानमन्त्रिणोद्घुष्टानि। तेन केन्द्र प्रशासन पक्षतः सर्वविध साहाय्याय अपि राज्य प्रशासने समाश्वासिते। अम्फानाख्य भीषण चक्रवातोद्भूतात् कष्ट संकुल कंपनात् परम् ओडिशा पश्चिम बंगालयोः आपत्प्रतिकार कार्याणि त्वरया सन्ति सम्पाद्यमानानि। पश्चिम बंगाले विषमा स्थितिः, यत्र 80 जनाः मृताः। बांग्लादेशे तावत् अनेकक्षेत्राणि जलप्लावितानि। ओडिशायां चक्रवातकारणात् व्यापकरीत्या 6 वृक्षाधारभूतसंरचनादयः सन्ति ध्वस्ताः। राज्ये 2,00,000तोऽधिकाः सुरक्षितीकृताः, परं यथासम्भवं न्यूनायिते दुष्प्रभावे आपत्प्रतिकार साहाय्यद्वारा तत्र 90%-त्मिकी विद्युदापूर्तिरस्ति पुनरपि प्रारब्धा। चतुर्थागम निर्गमरोधावधौ अखिलेपि देशे यथासम्भवं सर्वविधावश्यककार्याणि प्रारब्धीकृतानि। दिल्ली उत्तर कर्णाटकादिषु राज्येषु बसयान परिचालनमप्यारब्धीभूतं। समविषमसंख्यामाश्रित्य हट्टकोद्घाटनमपि वर्तते विहितम्। विशिष्ट श्रमिक रेलयानैः प्रवासीनां गृहप्रापणमस्ति सत्वरं प्रचाल्यमानं। प्रायशः 50,000-200 रेलयानैः 30,00,000तोऽप्यधिकाः प्रवासी श्रमिकाः सन्ति स्वस्वगृहं प्रापिताः। अग्रिममासतस्तावत् 102 रेलपरिचालनं सुनिश्चितीकृतम्। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य कार्यकारी मंडलीय अध्यक्ष पदवीं मण्डितवान्। तेनोक्तं कोरोना संक्रमण विरुद्धं भारतं सर्वथास्ति सबलं युध्यमानं। भविष्यगतं स्वास्थ्य समाह्वानं सम्मिल्य प्रतिकर्तुमपि विश्वासस्तेन प्रकटितः। देशे मे मासस्य 25 दिनाङ्कात् चरणबद्धरीत्या राष्ट्रान्तर्वर्तिनी नागरिकोड्डयन सेवा प्रारब्धा भवेत्। एतदर्थं विस्तृत दिङ्निर्देशाः सन्ति ख्यापिताः। 7 भागेषु विभक्ते उड्डयनमार्गे 63% यात्रिविमानपरिचालनम् आरोग्य सेतुतः कृतं विमानारोहणाय सुनिश्चितभाटकेन अन्वितं सत् प्रारब्धं भविष्यति। अधिभारतं कोरोनाग्रस्तानां सक्रियप्रकरणानां संख्या 66,000तोऽप्यधिकास्ति जाता। संक्रमणात् 35,सहस्राधिकाः जनाः मृताः अपि 48,000 नूनं परं स्वस्थाः अपि भूताः। अधिविश्वं कोरोना संक्रांतानां संख्या 1,50,00,000 उल्लङ्घितवती। संक्रमणाक्रमणकारणात् 32,000,000 जनानां मृत्युरप्यभवत्। संक्रामक महामार्यानया सर्वतो दुष्प्रभाविते संयुक्तराज्य अमेरिका देशे 94,000तोऽप्यधिकाः जनाः कालग्रासीभूताः।
RBI अर्थात भारतीय निग्रहात्मकाधिकोषः निक्षेपमित्यां 40 अवचितिं व्यादधात्। एतदतिरिच्य मुख्यकुसीदमितिरपि प्रतिशतं चतुरङ्कमानं यावत् न्यूनीभाविता। कुसीदमित्यां न्यूनीभावरूपविनिर्णयेन आयानुसारी कल्पितो मध्यवर्गः आधिक्येन लाभान्वितो भवेत्। प्रत्येकावध्यात्मकं ऋणं समापयितुम् अंशार्पणाय अपि मासत्रयवर्धनरूपो विहितो विनिर्णयः। पाकिस्ताने एकस्यां यात्रिविमानदुर्घटनायां प्रायशः 200 संख्याकाः भूताः मृताः। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन्स इत्यस्य विमानमतः लाहौरतः उड्डीयमानं सत् कराची क्षेत्राकाशे अभूत् दुर्घटितम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना दुर्घटनां शोकास्पदत्वेन विज्ञाप्य आहतानां स्वास्थ्यलाभाय आशा प्रकटिता। सुनील, संस्कृतवाङ्मये मनुजस्य स्वास्थ्यसन्दर्भे प्रामुख्येन उल्लिख्यते। प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते। तदर्थं च अवधेयमस्ति व्याधिविकारशून्यतायै। सत्यमुक्तं सत्यप्रिये व्याधिविकारशून्यत्वं चेदं सरलतया सन्धारयितुं शक्यते गृहगतैरेव पदार्थैः, यथा नाम हरिद्राप्रयोगः। औषधिगुणोपेता उदीर्यते इयम्। हरिद्रा स्वर्णवर्णाभा सर्वसौभाग्यदायिनी। स्वस्थतयैव लभ्यमस्ति सर्वविध सुभगत्वं सौभाग्यम्। तर्हि एनामेव सर्वालङ्कार मुख्यां हरिद्राम् अधिकृत्य अद्य पुनः प्रस्तूयते अस्माभिः वार्तावलीयं प्राक् प्रस्तुतमेव विवरणमेकम्। सुजनाः दर्शकाः, गमनागमन संकीर्णतामये सद्यस्तनपरिवेशे साधनोपलब्धि न्यूनत्वात् न किमपि नूतनम् उपस्थापयितुं क्षमाः वयम्। तदर्थमेव च वार्तावल्याः विशिष्टे अस्मिन् 250 अङ्के आनीयते इयं समयानुरूपा पुनः प्रस्तुतिः। भारते आप्राचीन कालात् गृहे गृहे उपयुज्यमानायाः हरिद्रायाः विविधौषधीय गुणगरिम्णः कः स्यात् अपरिचितः इव। उपस्कारभूतायाः हरिद्रायाः औषधीयं माहात्म्यं कीदृशं यदि स्यात् प्रश्नोऽयं, तदा नितरां साधारणात् भारतीयात् आयुर्वेद विशेषज्ञं यावत् जनः शक्नोति यथा संक्षिप्तम् उत्तरं संस्थापयितुम्। एवं हरिद्रा कांचनी पीता निशाख्या वरवर्णिनी, कृमिघ्नी हलदी योषित प्रिया हट्ट विलासिनी। हरिद्रा कटुका तिक्ता रुक्षोष्णा कफपित्तनुत्, वर्ण्या त्वग्दोषमेहास्र शोष पाण्डुव्रणापहा। यतः अथर्ववेदायुर्वेद तैत्तिरीय ब्राह्मणादिभ्यः आरभ्य चरक शुश्रुत भेलादि संहितासु प्रतिगृहम् आप्रौढ वयोवृद्धीय चिकित्सा परामर्श परासु वार्तासु हरिद्राख्यस्य उपस्कारभूतस्य द्रव्यस्य ततोधिकम् औषधस्वरूपस्य अस्यैव आप्यते यथाकाङ्क्षितं वर्णनं यथा प्रसङ्गम्। वस्तुतः सनातन धर्मावलंबिते कर्मकाण्डे संस्कार विशेषे अथवा साधारणे भोजन व्यवहारेपि हरिद्रायाः प्रयोगः तदीयोपस्थिति मात्रं वा तदीयौषधीय माहात्म्य निरूपकम्। हल्दी आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर, विटामिन ए से भरपूर, एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल, कैंसर से लड़ने वाली, मधुमेह को नियंत्रण करने वाली, वजन को कम करने वाली बहुत ही प्राचीन लाभकारी जड़ी है जिसे घर घर में यूज किया जाता है। नातिचिरमेव वार्तावल्यां हरिद्राधृतं JNU-तः अग्रे समानीतम् आधुनिक विज्ञान दिशा च पुष्टीकृतं विशिष्टमेव शोधकार्यमासीत् चर्चितम्। हल्दी में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो कर्क्यूमिन है। इनफैक्ट 95%
only 5% of the active ingredient is curcumin. तो जो प्रोफेसर गोवर्धन दास हैं जिन्होंने माइकोबैक्टीरियम में 30 साल तक काम किया है और बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड लेवल की डिस्कवरीज करी हैं, स्टेम सेल और माइकोबैक्टीरियम का रिलेशन उन्होंने निकाला है, तो उनका ही ये मेन काम है। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है कारक्यूमिन। कारक्यूमिन से बहुत सारे रोग का इलाज हो सकता है एंड सबसे मरण रोग आज के दिन में जो टीबी का भी इलाज हो सकता है। और कैसे हो सकता है वो भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं, कुछ काम किए हुए हैं। ओनली कारक्यूमिन भी नहीं है, बहुत सारे ऐसा साधारण जो उद्भिद जो है उसमें से बहुत सारे ऐसा कंपाउंड हम लोग निकाल रहे हैं। वस्तुतः वेदाधृतम अधुनापि प्रासंगिकम उपवेद संज्ञकम आयुर्वेदम तन्माहात्म्यं च इतोपि सम्मुखम् आनेतुं वेदायुर्वेद संपृक्तानां संस्थानां विभागानामपि उपस्थितिः शनैः शनैरेव परं विद्यते, वर्धमाना एव। पहली बार हमारे जेएनयू में एक अच्छी शुरुआत हुई है जिसमें हमने कोशिश किया है कि संस्कृत के नॉलेज को कैसे साइंस के नॉलेज के साथ मिक्स किया जाए, स्पेशली इन हेल्थ साइंसेस, जहाँ पे हम स्वास्थ्य के रिलेटेड पुराने आयुर्वेदिक नॉलेजेस को जो कि मोस्टली संस्कृत में ही हैं उसे साइंटिफिक तरीके से समझें। हरिद्राख्यम भारतीय औषधमिदं प्राचीनम अर्वाचीनम पाश्चात्यम चिकित्सा जगदपि विस्माययति इति नूनम हर्षास्पदम। वार्तावली वृत्तम डीडी न्यूज। बहुरत्न समन्वितास्ति अस्मत् संस्कृत शास्त्र संपत्। अस्यास्य संपदः अनर्घ्य वाग्विभव रूपोऽस्ति वेद वेदांत विषयः। अमुनैव ज्ञानमणिना चकितचकिताः इव पुराकालात् इदानीं यावत् समायान्ति दिग्दिगन्तरेभ्यः विद्याव्यासङ्गिनोऽत्र भारतभुवि। आयान्ति अभ्यस्यन्ति स्वीयाधिगमानुसारी च तद्ज्ञानं लेखमाध्यमेन लोकानाम् अवबोधाय निरूपयन्त्यपि। वैदिक विद्यार्णवेस्मिन् अवगाह्य संस्कृतानुरक्तिं भजमानेषु पुराकालिक विद्वत्सु ख्यातनामासीत् शाहजहां इत्यस्य मुगल सम्राजः सुनुः दारा शिकोहः। दारा शिकोहेन विन्यस्तोऽस्ति विचारोद्बोधकः वाङ्मयनिधिः। अस्यैव विदुषो विषये अस्य च वैदग्ध्य विषये विज्ञायते वार्तावलीये वृत्तविशेषेऽस्मिन्। यतो धर्मस्ततो जयः। धर्मजययोर्वास्तवं तत्त्वम् अवगन्तुं सदा यत्नशीलो भवति धार्मिको जयेच्छुको यश्च कश्चनापि। परं कथंचित् मुग्धाः मूढाश्च धार्मिकाः शाश्वतं धर्मतत्त्वम् अभिज्ञाय अनतिसाधारणं मूलं मानवभावमपि परित्यज्य यदा दरीदृश्यन्ते पराजिताः इव एव तदा भवन्ति प्रकटिताः लोकसमक्षं ते ये हि धर्मसूत्रं दृढीकुर्वन्तः सतथ्यं स्मरन्ति स्मारयन्त्यपि मतमतान्तर समन्वय सहकृतं नवनीतसमं वास्तवं धर्म संसारसारम्। आम तथा विधेषु एव अनन्यं स्मारयामो वयं धर्म समन्वय सारकं वरीयांसं जनम दाराशिकोह नामानम्। भारतम् आप्राचीन कालाद् वर्तते नैक धर्म संप्रदाय मान्यतानां पवित्र भूमिः। यद्यपि प्रभूता तथाई शक्तिभिर्बहुधा दुराक्रान्तं समातिष्ठत राष्ट्रमिदम्। अत्रत्ये च मौलिके संस्कृति विशेषे भूताः नैके कुठाराघाता यासाः। परं सर्वं सहमाना भारतीया सांस्कृतिकी समृद्धिस्तु नवनवां परम्पराम् अभिनवाभिनवां च अवस्थिति परिष्कृतिम् आत्मसात् कुर्वती सौहार्दपूर्णस्य साहस्तित्वस्य पराकाष्ठा स्वरूपं प्रतिपादयन्ति। यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् इत्येवं विधोदात्त भावनाः मूर्ततामासादयन्ति। सर्वस्मिन्नेव काले संकुचनमतिरिच्य विस्तृति प्रापणमेव सदार्जितवती। शरण्यामेव अस्यां सनातन इस्लाम धर्मयोः तत्त्ववेत्रीणां विशेषतः भक्ति सूफी परम्परयोः सत्तमानां सदा विस्मरणीयं स्तुत्यं च सुकृत्य जातं कस्तावत् उपेक्षितुं शक्तः।
तत्रापि यदा स्यादारब्धा वार्ता सनातन इस्लाम धर्मयोः पारस्परिक्याः समतायाः मध्यकालिक्याः भारतीयतायाः समग्रतो वा धार्मिकैकतायाः तदा तु सहजभावेनैव दाराशिकोः इत्येतन्नामधेयस्य कस्यचन अतिविशिष्टस्यैव पुरुषस्य स्वरूपं भवति पुरस्कृतमिव। आम् सैव शाहजहाँ शासनस्य दायादस्वरूपः दाराशिकोः, यः स्वकालिके विचारणापरे विद्वद्वर्गे आसीत् वरेण्योऽग्रगण्यः, यश्च मुगलशासनपरम्परायाम् अकबरादपि अधिकम् आमूलं धार्मिकैक्यम् अवगच्छन् किं वा ततोप्यधिकामेव दूरदृष्टिम् उपयुज्य स्वयमपि साक्षात् सनातनधर्मोत्कृष्टतां च आत्मसात् कुर्वन् गूढज्ञानान्वितानाम् उपनिषदां नैकासां फारसी भाषिकम् अनुवादं सिर्रे अकबर अर्थात् सर्वातिशायि रहस्यम् इत्येतन्नाम्ना सम्पादितवान्। ज्ञानपिपासुना दाराशिकोहेन न केवलाः संस्कृतग्रन्थाः एव अनूदिताः, अपि तु संस्कृतवाङ्मय प्रतिपादितान् धर्मसम्बन्धिविचारसारान् कुरान् हदीस् इत्यनयोः ग्रन्थविशेषयोश्च सुविचारितप्रभूतांशान् समाधृत्य उताहो धर्मद्वय स्वीकृतां पारस्परिकीं समीक्षणसम्मतिम् उपयुज्य च अभिनवः ग्रन्थविशेषः एव सृष्टः। मज्मउल बहरैन इति फारसी भाषाधृतः शब्दशोऽनुवादः एव समभूत् एतद् ग्रन्थविशेषस्य संस्कृतेन समुद्रसङ्गमः इत्यभिधानेन। सङ्गमः समुद्रद्वयस्य सनातन इस्लाम धर्मरूपस्य। सः ग्रन्थः पारसीकमाध्यमेनापि यदि कश्चित् संस्कृतं न जानाति अथवा हिन्दूधर्मं न जानाति तदा तेन तस्य ग्रन्थस्य प्रणयनम् असम्भवी एव वर्तते। अत एव तेन ज्ञायते यदि तेन अनुवादकार्यः नापि विहितः स्यात् तथापि सः संस्कृतज्ञाता सिद्ध्यति एव। द्वितीयोऽपि ग्रन्थः विद्यते बाबालाल दास बैरागी इत्यनेन सह सप्तदिनात्मिका वार्ता, तस्य आध्यात्मिकी वार्ता, तस्यापि ग्रन्थस्य प्राकृतं पारसीकमाध्यमेन अथ च संस्कृतमाध्यमेन उभयथापि अनुवादः सङ्ग्रहश्च विहितः। दाराशिकोहस्य पार्श्वे काचित् पण्डितमण्डली आसीत्, तन्मण्डलीद्वारा तेन सर्वं कार्यं व्यधायि। सत्यप्येवं सनातन इस्लाम धर्मद्वयमन्तरा सिद्धान्तगत साम्य दर्शनाकाङ्क्षी दाराशिकोहस्य उत्कटोऽभिलाषः कुराणमपि वस्तुतो वेदोऽस्माकम् अर्थात् अपौरुषेयश्च ग्रन्थोऽस्माकं सिद्धानां वेद इत्युच्यते इत्येतेन तदीयवचनप्रमाणेन भवति भूयो भूयः प्रदर्शितः। दाराशिकोह ने उपनिषदों का और भारतीय ग्रंथों के जो संस्कृत के विशेष ग्रंथ हैं उनका, भगवद गीता का और कुरान में जो समानताएं हैं, जो एक जैसी बातें हैं, भारतीयता को पूरी तरह से समर्पित करना चाहते थे समाज में और धार्मिक एकता को कायम करना चाहते थे। जैसे बड़े बड़े समुद्र एक में ही मिल करके सब एक महासमुद्र बने हुए हैं, तो उस तरह से हम अपने मानवीय चेतना को इन ग्रंथों के माध्यम से जागृत रखें। इतोतिरिच्य सर्वम् आलोचयता समदर्शिनानेन दाराशिकोहेन 22 विभागबद्धे समुद्रसङ्गमे यथा प्रसङ्गं सनिष्ठं च सन्त्युपन्यस्ताः धर्मद्वय सम्पृक्ताः विषमताः अपि परं समतायाः क्रमबद्धम् अत्रत्यं विशिष्टं निरूपणं तु विशेषतश्चेतश्चमत्करोति। चिदाकाशात् इष्क इति पदार्थो भूत् निरूपणमिदं परब्रह्म सम्बन्धिन्याः मायायाः इस्लाम धर्म सम्मतस्वरूपं विवृणोति। श्वास निःश्वास क्रमाधृतस्य सोहम् इत्युपनिषन् मन्त्रांशस्य हुवल्लाह इत्येवं साम्य स्वीकृतिः अल्लाह इत्येतस्य 99 नाम्नाम् ईश्वर समुपयुक्तैः सहस्राधिकनामभिः साम्य प्रदर्शनं। ततः खण्डप्रलय महाप्रलययोः कमायते कुवरा कमायते सुवरा इत्येतत् साम्याधृत तथ्य सम्मुखीकरणम्। अथ ब्रह्म विष्णु महेशानां जिब्राइल मिखाइल इस्राफिल इत्येतेषां च कथञ्चित् त्रिदेवत्व प्रतिपादनादिरूपं नैक साम्य प्रदर्शनपरं विवरणमात्रं तु नूनमेव दाराशिकोहान्वितं धर्म समन्वयवादं निरूपयत् प्रतिभाति।
एतदपि तेन तदासीत् विहितं यदा धर्मोन्मादः शिखरमासीत् संस्पृशन्। तस्मादेव स्वीयकृत्यकारणात् दुष्परिणामभाजनी भूतोऽपि धर्मसमन्वयकमहापुरुषेषु अद्वितीयः प्रथितपुरुषः सन् दाराशिकोहः सर्वथा स्थास्यते अविस्मरणीयः। न केवलं धर्मसमन्वयात्मदृष्ट्यर्थमेव स्मर्यते असौ, अपितु आधुनिके धर्मोन्मादमये प्रायः प्रतिकूलितीकृते परिस्थितिशेषे धर्मगतं तत्त्वैक्यमपि संस्मार्यते सदैव तेन इत्येतत् कथनपुरस्सरमेव तस्मै दाराशिकोहाय अभ्यर्पयामो वयं सदा सादरं स्मरणाञ्जलिम्। संस्कृत ज्ञानम् उपार्ज्य दाराशिकोहेन उपनिषदां श्रीमद्भगवद्गीता योगवासिष्ठ ग्रन्थयोश्च ज्ञानधारा फारसी भाषया प्रवाहिता। नूनम् अनुपमा इयं संस्कृत भाषा। संभाषण सारल्यं पदलालित्यं आशय घनत्वं चास्ति आस्माकीन संस्कृत भाषायाः असाधारणत्वम्। सुनील, संस्कृतस्य इयमेव सरलता सरसता चापि मूलेधिष्ठितास्ति अस्माकं गीतानुवादसङ्कल्पनायाः। वार्तावल्याः पदाभिवृद्धेरनुगुणं गीतानुवादस्पर्धापि अस्मदीया विख्यातिवर्धिनी वर्तते। अस्यां च स्पर्धा श्रृङ्खलायाम् उपस्थितास्ति पुनरेकदा निर्णयख्यापनवेला। औत्सुक्य प्रशमनं करणीयं दर्शकानां सत्यप्रिये। सत्वरमेव सूचयामि विजेतृनाम। संस्कृत संगीत समन्वय संधातृषु स्पर्धकेषु विगत स्पर्धामिव विजयश्रीः वरयति विजेतृरूपेण भुवनेश्वरवासिनं डॉक्टर हरे कृष्ण मेहरवर्यम्। तदीयां च अनूदित गीतिं शुश्राव्य स्वराभरणैः अलङ्करोति ज्ञान निपुणः मुम्बईस्थः डॉक्टर श्रीरंग भावेः। न कदाचिदस्माभिः तल्लोकितं तदीयन्तु प्रयोजनं किं भविता मातः मातर्भिन्नं वै तव रूपतः परमेश्वररूपं किं भविता न कदाचिदस्माभिः तल्लोकितम्। किमु मानवा देवाश्च सर्वे परिपालिताञ्चलते स्वर्गोऽस्ति इह संसारे पदयुग्मतले वैते ममतामेव दाति यदक्षियुगम् ओ ममतामेव दाति यदक्षियुगं काचिदेवं मूर्तिः किं भविता मातः मातर्भिन्नं वै तव रूपतः परमेश्वररूपं किं भविता न कदाचिदस्माभिः तल्लोकितम्। ज्वलयेत् किमु दुःखोत्तापः किमु क्लेशघनो वर्षे एतौ हस्तौ मङ्गलदौ वर्तेते सदा शीर्षे त्वं मार्गे तमिस्रे यद्राजसे ओ त्वं मार्गे तमिस्रे यद्राजसे न सूर्यप्रयोजनं किं भविता मातः मातर्भिन्नं वै तव रूपतः परमेश्वररूपं किं भविता न कदाचिदस्माभिः तल्लोकितम्। न मातुः परं दैवतम्
मातृदेव्यै मानवन्दनैव विधीयते अनेन गीतेन। भारतीय संस्कृतेः उदात्त तत्त्वानि निरूपयन्ति कानिचन चलचित्रगीतानि। चलचित्रं हि जीवन प्रतिबिम्बरूपम् इति सार्थमेव। संस्कृति संदोहे निलीन सुनील न विस्मरतु नवस्पर्धा गीतोद्घोषणम्। कथयतु किमस्ति गीतं नूतनम् अनुवादस्पर्धायै? सन्यासी इत्याख्य चलचित्र समाहितं जीवन दर्शन ख्यापकम् एतदस्ति अभिनवं वार्तावलीयं स्पर्धागीतम्। मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे। अस्य च गीतस्य वार्तावली नियमानुरूपाः अनूदित प्रविष्टयः भवद्भिः प्रेषणीयाः सन्ति आगामि जून मासिकं प्रथमदिनं यावत्। ततश्च अधिगत प्रविष्टिषु प्रथमस्थान भाजी विजयी प्रविष्टिः संसूचयिष्यते जून मासिके एव 6 दिने। सुहृदः संस्कृतानुरागिणः, कालो हि विवशीकुरुते इदानीम् अस्मान् एतदङ्कस्य उपसंहरणाय। अनुज्ञेयाः वयमिदानीं साकाङ्क्षाश्च वयमत्र यत् काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। शुभं भूयात्। नमो नमः। ब्रुवते ये च त्वत्माननायां किमप्युच्चन्नो वचनं निकषापि मातर्भगवन्तं तव प्रेम्णो नहि मूल्यम्। एतद्विजानीमः त्वत्तो महत् एतद्विजानीमः त्वत्तो महत् सांसारिकविभवं किं भविता मातः मातर्भिन्नं वै तव रूपतः परमेश्वररूपं किं भविता न कदाचिदस्माभिः तल्लोकितं तदीयन्तु प्रयोजनं किं भविता मातः मातर्भिन्नं वै तव रूपतः परमेश्वररूपं किं भविता न कदाचिदस्माभिः तल्लोकितम्।